प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम आइजैक न्यूटन है। बच्चों, मैं एक साइंटिस्ट भी था। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू सर न्यूटन्स क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, चले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 1 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 में एडिशन यानी जमा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एडिशन यानी जमा क्या होता है? तो चलें, अब मैं आपको अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा कि जमा क्या होता है। अच्छा, तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मेंढक जमा 3 मेंढक हैं, जो कि बराबर होते हैं 5 मेंढक के। और अब यहाँ पर 1 गुब्बारा जमा 1 गुब्बारा, जो कि बराबर हुआ 2 गुब्बारों के। चलें, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 3 चूजे जमा 3 चूजे, जो कि बराबर हुए 6 चूजों के। बच्चों, आपको जमा करने की समझ आ रही है ना? चलें बच्चों, अब हम एनिमेटेड वीडियो के जरिए जमा करना सीखते हैं। I am addition, and this is my mission. You're here to add some knowledge. You need to succeed and thrive. It's addition, and this is how it's spelled. This is the process of adding something to something else. I am an addition symbol, what you'll use to add. I'm kinda shaped like a cross, and that's pretty rad. You can add anything to another thing with me. Just take 2 objects, put me in the middle and see. But before we get started, there's someone you have to meet. It's my friend, the equal symbol. He's a math athlete. I am the equal symbol. You'll find me to the right of any math equation. I bring the final amount in sight. I work with any math symbol to get the answer you need. Let us show you how we help each other to succeed. I am addition, and this is my mission. You're here to add some knowledge. You need to succeed and thrive. It's addition, and this is how it's spelled. This is the process of adding something to something else. We'll start adding something simple to see what we can equal. This is 1 panther, but if you want to, you'll add 1 more as well. Then I take the panthers, which now equal 2. That's the number I produce now that this equation is through. Here are 2 babies, and when I add 2 more, I equal the total number of babies, which is 4. I am addition, and this is my mission. You're here to add some knowledge. You need to succeed and thrive. It's addition, and this is how it's spelled. This is the process of adding something to something else. And if you have 5 ice creams and you add 5 more, it will equal 10 ice creams. That's twice as many as before. And here I have 3 elephants, and when I add 1 other, I equal them together, which is 4, I assure. You can add anything you want to anything else. When you have an addition and equal symbol to help. When you have the number 5 and you also want to add 2, the final number equals 7. This equation is through. And if you had a 3 and wanted to add 3 more, you would end up equaling the number 6 out the door. I am addition, and this is my mission. You're here to add some knowledge. You need to succeed and thrive. It's addition, and this is how it's spelled. This is the process of adding something to something else. I'm addition, and this is my mission. You're here to add some knowledge. You need to succeed and thrive. It's addition, and this is how it's spelled. This is the process of adding something to something else. Addition. Adding by 1. 1 to 9. Let's get started. Okay, everybody, let's get our adding caps on. I've got 1 plus 1 equals 1 plus 1. 2. 1 plus 1 equals 2. Woo! 1
plus 2 equals 1 plus 2. 1 plus 2 equals 3. 3. Woohoo! 1 plus 3 Oh, equals let me see. 4. 1 plus 3 equals 4. 1, 2, 3, 4. 1 plus 4 equals Wait. Don't tell me I know this. Let me see. 5. Yeah, 1 plus 4 equals 5. 1 plus 5 equals Oh, yeah. 1 plus 5 is... 6. That's 6. 1 plus 5 equals 6. 1 plus 6 equals Yeah, let me get that counting cap. I got the counting cap. 7. 1 plus 6 equals 7. 1 plus 7 equals Wait. Don't tell me. 1 plus 7. 8. 1 plus 7 equals 8. 1 plus 8 8. equals 1 plus 8 equals 1 plus 8. 9. You're doing wonderful. Really good. 1 plus 9 Whoa, that's a lot of equals- numbers. That's a lot of number. Let me add them. Okay. 10. Yeah. 1 plus 9 equals 10 is 10. Good That work. was great. Let's do it again. Okay. Ready? Yeah, let's go. Here we go. 1 plus 3. Ooh, 1 plus 3. Yep. 1 plus 1 3 plus 3 equals Look at the apples. Count them if you have to. 4. 1 4. plus 3 equals 4. That's right. Oh, yeah. Give me another one. 1 plus 8. 1 plus 8. 1 plus 8. 1 plus 8 equals 1 plus 8 equals 9. 9. Yeah. That's right. Let's do it again. Give me another one. Great job, guys. 1 plus 2. Oh, yeah. I know this. Yeah, what is it? 1 plus 2 equals That's 3. 3. 1 plus 2 is 3. Right. 1, 2, 3. 1 plus 5. 1 plus 5. Math is 1 plus 5 equals 1 plus 5 is 6. 6. This is fun. Let me get another one. Okay, let's have another one. 1 plus 1. Oh, yeah? 1 plus 1. 1 plus 1 That's equals 2. 2. I knew that. 1 plus 1 is 2. 1 plus plus 7. 1 plus 7 1 equals plus 7 equals 8. 8. Yeah, 8. Give me another one. Okay, let's have another, please. 1 plus 4. 1 plus 4. 1 plus 4 That equals. equals 1 plus 4 equals 5. 1 plus 4 is 5. Let me do it again. Let me try another one. 1 plus 9. Whoa, 1 plus 9. That's a lot of fingers. 1 plus 9 It's almost equals 2 hands. 1 plus 9 equals 10. 10. Yay! 10. That was great. 1 1 plus plus 6. 1
6. Look at those fingers, so silly. 1 Well, let me plus see. 6 Oh, equals yeah, 1 plus 6 equals 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You've done an excellent job adding by It's 1 over. from 1 through 9. Keep practicing. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर में जमा करने से, जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर में एक नंबर जमा करने से 2 नंबर हासिल हुआ है। तो बच्चों, जमा करना बहुत आसान है ना? चलें बच्चों, अब हम एनिमेटेड वीडियो के जरिए जमा करना सीखते हैं। एडिशन क्या है? आपने कुछ टर्म्स के बारे में सुना होगा जो कि प्लस, सम, गेटिंग टुगेदर और टोटल को मालूम करना है। आइए कुछ प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। लौरा सेब के दरख्त से 6 सेब तोड़ती है। मेरे साथ काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके पास 6 सेब हैं। लौरा सेब के दरख्त से 3 और सेब तोड़ती है। याद रहे आपके पास पहले से 6 सेब मौजूद हैं। आइए दोबारा से काउंट करते हैं। 6, 7, 8, 9। उसके पास टोटल 9 सेब हुए क्योंकि 6 जमा 3 9 के बराबर होता है। आइए एक और प्रॉब्लम को हल करते हैं। रूबी के पास 2 प्रिंट ब्रशेस हैं। मेरे साथ काउंट करें। 1, 2। उसके पास 2 प्रिंट ब्रशेस हैं। उसको क्लोजेट्स में से 6 और ब्रशेस मिलते हैं। याद रहे आपके पास पहले से 2 ब्रशेस मौजूद हैं। आइए आगे काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 जमा 6 बराबर है 8 के। रूबी के पास टोटल 8 प्रिंट ब्रशेस हैं। आइए एक और प्रॉब्लम को हल करते हैं। बॉबी के पास 5 डोनट्स हैं। मेरे साथ काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5। उसके पास 5 डोनट्स हैं। वो डोनट शॉप पर जाती है और 4 डोनट्स और खरीदती है। याद रहे आपके पास पहले से 5 डोनट्स हैं। आइए आगे काउंट करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। उसके पास टोटल 9 डोनट्स हैं क्योंकि 5 जमा 4 9 के बराबर होता है। Learn to add basic maths for young kids with +1 Rainbow Learning। 1 duck plus 1 duck बराबर है 2 ducks के। 1 apple plus 2 apples 3 apples के बराबर होता है। 1 banana plus 3 bananas 4 bananas के बराबर होता है। 1 cupcake plus 4 cupcakes 5 cupcakes के बराबर होता है। 1 fish plus 5 fishes 6 fishes के बराबर होता है। 1 आइसक्रीम प्लस 6 आइसक्रीम 7 आइसक्रीम्स के बराबर होता है। 1 स्ट्रॉबेरी प्लस 7 स्ट्रॉबेरीज 8 स्ट्रॉबेरीज के बराबर होता है। 1 ऑरेंज प्लस 8 ऑरेंजेस 9 ऑरेंजेस के बराबर होता है। 1 चेरी प्लस 9 चेरीज 10 चेरीज के बराबर होता है। तो बच्चों, आपने जमा को वीडियो के जरिए बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलें बच्चों, अब कुछ मिसाल आपकी किताब से भी करते हैं। जमा, चीज़ें गिनें, जमा करें और खाली डब्बे में चीज़ें बनाएं और उनमें रंग भी भरें।
उम्मीद है कि बच्चों आपको इस क्लास में एडिशन यानी जमा के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।